everyone. I hope you all are doing good. Last topic was the transcription, in which we have seen how the proteins or the how the sorry mRNA has been formed and what are the steps involved and the mechanism, the entire mechanism we had discussed, right? So let's continue with the another topic, which is the part of the central dogma, and we are continuing the another process when your mRNAs enter in your cytoplasm. That is the process is known as the translation, right? So what is the translation? It is the basically the assembly of the polypeptides on the ribosomes. We have the different configurations of the ribosome, 70s units, 30s units, and 50s units. So these type of the subunits we had discussed about the ribosomes and how how the proteins are assembled and the specific proteins has been assembled on those ribosomes. So we are going to discuss in this part. So apart from this, we already have discussed where the ribosomes are present, how they are working, how the entire machinery works to run your body, right? So the entire things we already have discussed. You have must watch those the previous videos to understand this the continuity of this process, right? So let's begin with the first part in which we can see that the living cells devote more energy. As everybody knows, there are the more stress on the living cells or how to maintain the other functioning of the body and to those controlling to those cells energy and the functioning of those cells. So we need a protein. So this is the mechanism which synthesize the proteins tend to any other aspect of the metabolism, right? So next is about to the third of the dry mass of the cell consists of the molecules that directly participate in the protein synthesis. This reflects the importance of the protein synthesis to existence of the microorganisms. Like everybody knows how the cells work, right? All the biology students can easily understand it, that what the purpose of entire body cells to control the functioning of your specific organs, right? Either it is a heart, either it is your lungs or liver or specific kidneys, how the assimilation, secretion, everything has been take place at the perfect timing with this process, right? So move to the next slide. That is it is just I want to show you the translation or can overview of the process. When the ribosomes translate the genetic message of mRNA into the proteins, right? So is the how the mRNA is translated 5' and to 3' and producing a corresponding N terminal and the C terminal. As everybody we knows that the amino acid chain, there are the two terminals, C terminal and the N terminal, right? So in on those terminals there is a long chain of your the specific amino acids, right, which are controlling your other functioning of the body in the form of by making the proteins, right? So amino acids bound to the tRNAs are inserted in the proper sequence, like specific binding of each amino acid to its tRNA, right? Uh, Specific base pairing between the mRNA codon and the tRNA anticodon, right? So we already have shown the we already have seen the pictures in which I had already explained that how these codons are placed, how in the triplet form they are forming in the triplet form, and the anticodon would be on your tRNA. mRNA will be make the messenger RNA, and tRNA at the transferred RNAs, right? So next, when I show to you the mechanism, then you will get the entire process in your mind. You will easily get to know that how the translation has process has been worked. Okay, so what are the components generally used as a translations? Basically, we can see the mRNA that already handmade by the transcription process. So next is tRNA, then ribosomes, then specific enzymes, and finally the protein has been formed. So first of all, how the mRNA does work? Uh, in eukaryotes, made in the nucleus, right?
as when we were doing the process, when we were discussing the process of the transcription, we had seen that in the eukaryotes it is happening in the nucleus, then it is transferred to the cytoplasm. In the prokaryotes, transcription and translations occur concurrently at the same place, right? Now, what the tRNA will do? Adapter molecules that mediate the transfer of information from nucleic acid to the proteins. It will transfer the specific informations or in the form of the codon or the genetic information that will transfer to the specific protein. So tRNA defines as a transfer RNA. ठीक है, उसके बाद आ जाता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑफ सेल्स है, ठीक है। राइबोसोम सेल के अंदर प्रेजेंट है, ये लोकेटेड कहाँ होंगे? इन द साइटोप्लाज्म में भी कंटेन राइबोसोमल आरएनए होगा एंड प्रोटीन फॉर्म, ठीक है, वहां पे होगी। एंजाइम कौन कौन से चाहिए? एंजाइम बेसिकली क्या करते हैं? इट रिक्वायर टू अटैचमेंट ऑफ द अमीनो एसिड्स टू द करेक्ट टीआरएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। जो आपके अमीनो एसिड बनते जाएंगे उसे करेक्ट टीआरएनए मॉलिक्यूल पर बाइंड करवाएंगे और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। एंजाइम विल मेक इट मोर sticky, more the more strengthened, more give the power to bind it for a life, for the accurate functioning, ठीक है। तो वो उस चीज को लूजली बाइंड नहीं करेगा, उसे स्ट्रांगली बाइंड करेगा, ठीक है। तो बिटवीन द अमीनो एसिड, हाउ द प्रोटीन्स, what are the proteins basically formed? Whatever the proteins will form, this it will be soluble factor necessary for the proper initiation, elongation, and the termination. This is the process of mechanism by 2-year translation will be gonna complete. Then tRNA, tRNA में क्या होता है कि ये स्मॉल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल है जिसमें 70 to 95 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे इन द लेंथ, अबाउट 4s, जिसे हम स्वेटबर्ग यूनिट भी बोलते हैं इन साइज, ओके। इन एडिशन इसमें क्या होगा? एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा एंड यूरेसिल होगा। इंस्टेड ऑफ द थायमिन देयर वुड बी अ यूरेसिल। सो टीआरएनए हैव मॉडिफाइड बेसिस होंगे जो प्रोड्यूस करेंगे केमिकल ऑल्टरेशन ऑफ द 4 प्राइमरी न्यूक्लियोटाइड्स में। ये आपको अंडरस्टैंड होगी ये लाइन जब हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। जितने भी टीआरएनए मॉलिक्यूल हैं ये एक क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर में आपको पिक्चर में दिखाऊंगी कि कैसा होता है। So basically which look like a L shaped in the 3 dimensions. At the base of the L, 3 nucleotide form an anticodon. The sequence of the anticodon dictates the amino acid that bind to it, and जो एंटीकोडन सीक्वेंस होगी वो कॉम्प्लीमेंट्री कोडन होगी। ये तो बहुत कॉमन सी बात है कि जितना भी डीएनए है आपका, जितना भी आरएनए है, वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स पे काम करता है, कॉम्प्लीमेंट्री कोडन्स पे काम करता है। सो इन द सेम वे इट विल आल्सो वर्क एज अ कॉम्प्लीमेंट्री कोडन सीक्वेंसिंग, राइट। सो जैसे कि GCA इज ए कोडन फॉर एलानिन है, सो इसका एंटीकोडन जो होगा वो CGU होगा, ठीक है। बट इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये माइंड में रखने वाली बात है कि ये डायरेक्शन कौन से में काम करेगा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब जितने भी अमीनो एसिड्स हैं आपके उस पे 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल एंड होगा ऑफ द टीआरएनए। टीआरएन ये वाली बात करती है, क्लोवर लीफ कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, इस तरह का। ये टर्शरी स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है जिसमें, ठीक है, हर जैसे कि आपको पता है कि डिफरेंट शेप्स होती है टीआरएनए की, वो उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कॉम्प्लेक्स जितना जाता जाएगा वैसा स्ट्रक्चर होगा। ये आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये प्राइमरी एक सिंगल लाइन स्ट्रक्चर होता है, ये आपका टर्शरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो अमीनो एसिड मस्ट बी अटैच्ड टू द फंक्शनल एंजाइमेटिक रिएक्शन करवाने के लिए इन्हें एनर्जी चाहिए होगी, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि टीआरएनए ये रिकॉग्नाइजेशन करवाता है, पहचान करवाता है एक स्पेसिफिक कोडोन्स की, ठीक है। अभी क्वेश्चन आता है कि आर द टीआरएनए फॉर एवरी कोडोन, हर एक कोडोन का अपने टीआरएनए होते हैं। सो आर देयर 61 टीआरएनएस? नो, एक्चुअली अबाउट 40 वोबल इन द थर्ड पोजीशन ऑफ एंटीकोडन। मैं आपको वोबल हाइपोथेसिस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपको ये वाइवास में भी पूछा जाती है। सो आई विल टेल यू द वोबल हाइपोथेसिस। आ गया ना अभी? तो वोबल्स जो होते हैं अक्सर सिंपल एंटीकोडन होते हैं। एक तो कोडोन प्रोसेस होगा, इसका एंटीकोडन होगा, उस पर यूरेसिल आएगा। ये माइंड में रखना कि इंस्टेड ऑफ द थायमिन देयर वुड बी यूरेसिल। सो वोबल अकर्स इन द एंटीकोडन। जो थर्ड पोजीशन है कोडोन की, वो एबल टू बेस पेयर लिस्ट स्पेसिफिकली, ठीक है। उसको कोई नहीं है कि वो एक्यूरेट जो उसका
ऑपोजिट कोडॉन है उससे बाइंड करना है या फिर डायरेक्टली यूरेसिल से कर लेना है, ठीक है, तो वो लेस स्पेसिफिकली है बिकॉज इट इज द लेस कॉन्स्ट्रेंट थ्री डायमेंशनली, ओके, allows a tRNA anticodon to recognize up to 3 different codons. I will show you the picture. Here you can see, as I earlier mentioned, that it would work like it would be work in the direction of the 3 prime to 5 prime, ठीक है, तो ये आपका mRNA स्ट्रैंड है। इसमें क्या है, जी सी जी, इसका जो एंटीकोडन है वो सी यू सी है, ये नॉर्मल पेयरिंग होगी, ठीक है। अभी वोबल पेयरिंग कौन सी होगी कि इसका जो थर्ड है कोडॉन उस पे यूरेसिल आ गया, ए पे सेकंड पे भी यूरेसिल आ गया, सो इट वुड बी योर वोबल पेयरिंग, ठीक है। बट दोनों ही इंडिकेट किसे कर रहे हैं, ल्यूसिन को। क्लियर, नाइस, मूव टू नेक्स्ट। हियर यू कैन सी इफ इट इज द फिनाइलएलेनिन, फिनाइलएलेनिन टीआरएनए है तो उसका एंटीकोडन कुछ इस तरह से दिख रहा है, लास्ट में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तीनों यूरेसिल आ सकते हैं, ठीक है, और ये सी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इट वुड बी द वोबल पोजीशन, ठीक है। दिस थर्ड कोडॉन इज ऑल नोन एज द वोबल पोजीशन। अगर पूछा जाता है आपको वाइवास में क्वेश्चन, देन यू वुड बी गिव द आंसर इन दिस वे, ओके। सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि एंटीकोडन है ACG है, कैन पेयर विद विच कोडन, ये आप मेरे को आंसर देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है, इसका आंसर देना। नेक्स्ट आ जाती है एंजाइम्स, हाउ द एंजाइम्स इन्वॉल्वड इन दिस प्रोसेस। जो अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम है ना, ये कैटालाइज करती है, ठीक है, कैटालाइज एंजाइम है जो स्पीड अप करती है रिएक्शंस को। ये अटैचमेंट होती है इसकी टीआरएनए मॉलिक्यूल के साथ जो कि एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के साथ अटैच है, ठीक है। देयर इज एटलीस्ट वन अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, एक एंजाइम के साथ एक अमाइनो एसिड जुड़ा होगा, सिंथेटेज एंजाइम के साथ एक अमाइनो एसिड जुड़ा होगा, जो अटैचमेंट है अमाइनो एसिड की वो एक्टिवेट करेगी या तो चार्ज अप रखेगी टीआरएनए इंटायर मॉलिक्यूल को। जो अटैचमेंट है ना अमीनो एसिड्स की, वो बेसिकली आपके सी टर्मिनल पे होगी, जो आपका विच इज नोन एज द कार्बोक्साइल टर्मिनल। जो पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज है ना, वो होती है कैटालाइजेस द सीक्वेंशियल ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड्स टू द ग्रोइंग चेन, ठीक है। जो आपकी एक चेन कंटिन्यू हो रही है उस चीज की ग्रोथ के लिए पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एंजाइम काम करती है, जिसमें फॉर्म्स ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड्स फॉर्म होंगे एक स्पेसिफिक इन बिटवीन द स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स, ठीक है। अभी राइबोसोम्स क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइबोसोम एक स्पेसिफिक साइट है पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस की, ठीक है। लॉन्ग चेन ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होती है, आपके राइबोसोम्स पे होती है। दे रिकॉग्नाइज द फीचरिंग द सिग्नल दैट द ट्रांसलेशन। ये अभी अपने आप कोई भी बॉडी में, मैंने एक स्टार्टिंग में बायोकेमिस्ट्री में बात बोली हुई है, बायोलॉजी में स्टूडेंट्स को पता है कि बॉडी में रेंडमली कुछ नहीं हो रहा है, रेंडमली एंजाइम्स वर्क नहीं कर रही, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है। एक एंजाइम काम करना रुक गई तो बाकी की एंजाइम